So today we'll start, we've already started crop production and management wala chapter. We did some of it yesterday. We're going to revise that and then we will move on with the rest of the chapter. Okay. So sabse first question is, what is this called? Please read the question and on the chat box. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, what is it called? On the chat box, everybody please reply. Answer for this is crop. Many of you have got it right. What are the two types of crop? And you will not send me one name. दोनों एक साथ लिख के भेजो please on the chat box. Two types of crop. There are two types of crops. One is kharif crop. Another one is rabi. Okay, kharif and rabi. KHARIF RABI. Do not forget it, please. Some of you have got it right. Others have not got it right. Try to remember these names throughout this chapter. Kharif and rabi. All right. Winter crop कौन सा होता है? Kharif या rabi? Which one is the winter crop? I asked you to remember. Something. I gave you something to remember. Which one is winter crop? I've got answer from Mehak, Asma. Winter crops are rabi crops, जो winter में grow होते हैं. तो kharif crops कब grow होते हैं? It starts with the season starts with R. मैंने आप लोग को बोला था कैसे याद करना है. KRW. Thank you, Mehak, Asma. Yes, rainy season. Kharif crops rainy season, rabi crops winter season. ठीक है, वो R common रखोगे आप बीच में. Perfect, you guys, amazing. What is paddy? Paddy is a kharif crop or a rabi crop? Paddy is a kharif or rabi crop? Paddy, kharif और rabi. And ये मैंने आप लोग को yesterday का जो worksheet है उसमें इसका एक question था. Please think and tell me, paddy is kharif or rabi? Okay, most of you have answered. Paddy is a kharif crop. If you remember yesterday के worksheet में the question was कि आप जो पैडी है वो विंटर में क्यों ग्रो नहीं होता है? क्योंकि विंटर राबी क्रॉप्स होते हैं और पैडी विंटर में ग्रो नहीं होता है, which means paddy is rabi crop. All right. Sorry, paddy is kharif crop. Please list any three agricultural practices. Last time we saw 7 agricultural practices. Send it to me at एक ही साथ आप भेजोगे, कोई भी 3 जो आपको याद है. Guys, there are 7 agricultural practices. ठीक है, 7 agricultural practices होते हैं जो मैंने आपको दिखाया था. सबसे पहले farmers अपना soil को prepare करते हैं, ठीक है, ताकि वो level में आ जाए, उसकी मिट्टी सही रहे ताकि उसमें plants grow हो सके. Second is sowing. Sowing मतलब बीज बोना. Third is manure और fertilizers add करना, यानी nutrients add करना. फिर हम उसमें पानी देते हैं और उसमें से जो अनवांटेड प्लांट्स है, फिफ्थ वाला है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स होती है अनवांटेड प्लांट्स. पानी देते हैं तो उनके साथ कुछ पौधों के साथ अलग अलग छोटे छोटे पौधे भी ग्रो होते हैं. वी रिमूव दोस. देन वो पौधा जब पक जाता है, उसकी फ्रूट्स एकदम पक जाती है, तो वो हार्वेस्टिंग होती है. फिर वो सारी ग्रेन्स की स्टोरेज होती है. प्लीज रिमेम्बर इट एज अ पिक्चर. एक पिक्चर की तरह इसको याद रखो कि एक फार्मर स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या करेगा. जस्ट रिमेम्बर all these 7 processes एक ऑर्डर में होने चाहिए. ठीक है, आप सबसे पहले वीड्स हटा के फिर सॉइल प्रिपेयर करके सोइंग नहीं करोगे. आप पहले मैन्योर डाल के फिर सीड्स को सो नहीं करोगे. ये एक ऑर्डर में है. आप पहले हार्वेस्टिंग नहीं करोगे. जब सोइंग नहीं हुई है तो हार्वेस्टिंग कैसे होगी? सो ये 7 प्रोसेस आपको ऑर्डर में याद रखने हैं. ओके. Alright guys, so loosening of soil, like some of you have guessed it, soil को थोड़ा ढीला करना. ठीक है, जैसे soil में cracks आ जाती है और वो ढीला हम क्यों करते हैं? Now my next question is, why do we need to loosen soil? ठीक है, हम वो मिट्टी को mix करके थोड़ा ढीला करते हैं, plowing करते हैं. You remember plowing, right? Yesterday we studied about plowing. So why do we really do plowing? हम क्यों उसको मिट्टी को खोदते हैं? To that there have trees, no? Yeah. We want to grow the trees, means we want to lose that mitti, that then I can grow the tree. So how will, so that, okay, so Shahid का point, he is saying that हम मिट्टी खोदेंगे तभी जाके हम उसमें बीज ठीक से बो पाएंगे.
Is it, if it's too hard, then Shahid, will we be able to sow the seeds? मैम सूखी तो मट्टी में झाड़ पेरने होता नहीं मैम. Correct. भीगी तो Okay. पेरने होता. Shahid, Safiha, amazing. Aisha, do you have a different point? Why do we have to do this? Why do we loosen the soil? Aisha? Hajira, I can't hear you. Ma'am, Yes. ma'am, why do we need to lose soil? Because they have something mixture, no stones, and Yeah. then we will be separate, and then we will be clean there We and will lose clean. Amazing. So all these big rocks that is there, we have to remove that. Uske liye we have to loosen the soil. Arfat, do you have a different answer? Arfat, Umesh, do you have a different answer? Yes, ma'am. I Yes, think, Umesh. ma'am, I think if we mix that to sand and to clay soil, no, ma'am, we can, Ma'am, can you see my answer in chat box? I'm checking. ma'am, Yeah. we can things like that in ma'am or in olden days they make that like if they don't have cup, no, ma'am, they can make that cup and ma'am we can do concrete also. Okay, perfect. So you're saying concrete. Wait, I didn't understand your concrete wala point. Yes, ma'am. Now see, if we need to make home, no, Yeah. we will get stone and that soil. Yeah. Ma'am, your voice is not coming. Hajira, sit with your brother, no? No, ma'am. Okay, okay. Ma'am, your Umesh, voice is continue your stucking, ma'am. answer. Ma'am, now Yeah. if we use, ma'am, if soil, no, it used to lots of things, ma'am. Now I tell concrete because, ma'am, lots of like, ma'am, there is lots of homes. It's made by like they will use this sand and that stone to mix it and make concrete to make stronger. Okay, okay. Ma'am. All right. Noted that point. Now think in terms of hawa, air. So I'm telling you answer what Aisha and Asma has given me on the chat. Others, those who have answered, somewhat your answer is correct. Like there are many reasons why we need to loosen the soil. Soil को ढीला करने के लिए बहुत ज्यादा reasons होती है. क्यों ऐसे farmers plowing क्यों करते हैं? तो आयशा ने चैट में लिखा है कि loosening of soil को plowing या फिर tilling बोलते हैं, which is correct. हम लोग प्लाविंग और टिलिंग क्यों करते हैं? अस्मा ने एक पॉइंट दिया हुआ है कि okay, Arfat has also given me one point. Asma has written because when soil is loose, roots grow deeper and absorb water and nutrients better, which is a very good point. कि एक तो roots ज्यादा deep जा सकते हैं और पानी और nutrients ज्यादा absorb कर सकते हैं. Amazing, Asma. एक और point that she has given is so that we can help the growth of microorganisms and earthworms. Earthworms, you all know they are farmers' friends. Yes or no? Give me a thumbs up, guys. Yes, ma'am. Earthworms are important in the farm क्योंकि वो मिट्टी में ऐसे चल के उसमें holes बनाते हैं ताकि हवा आ सके, right? So just because of that reason also, ताकि air आएगा उसमें, that's why we have to loosen the soil. Arfat says to put seeds. Yes, we have to loosen soil to put seeds. Alia says so that every day we can put some water. And Alia, amazing, ताकि वो water अच्छे से नीचे जा सके. Okay. Okay. Now last question is there were 3 tools हमने जो देखे थे, 3 कोई तो हमने tools देखे थे जो plowing के लिए use होता है. हमने कल वीडियो में देखा था 3 चीजें. ठीक है? I want you guys on the chat box write the name. You don't have to raise your hand. Chat box मैम में I आप send मैम chat box में. yes send it to me. Okay, let me see. वो 3 tools क्या है? Ma'am, Okay. I thank you. That so there are 3 tools जो farmers cultivation के लिए या फिर plowing के लिए use करते हैं. एक का नाम है plow, एक है hoe और एक है cultivator. मैं spelling लिख रही हूँ, ठीक है? Plow, hoe and cultivator. Ma'am, I hope. Not hope, it's hoe. Plow, hoe, cultivator. Sahil has given me एक और example. He said sickle.
सिकल यानी खुरपी, पता है ना, ऐसे टेढ़ा होता है, उससे ऐसे घास काटते Yes, हैं, ma'am. खुरपी। Yes. तो वेरी गुड। ये सिकल आपके बुक में नहीं है, बाकी 3 चीजें आपके बुक में है, बट वेरी गुड। सेलिब्रेट योरसेल्फ प्लीज, एवरीबॉडी सेलिब्रेट। Ma'am, what अस्मा, did I give for this Mehak, one? Safiha, Manan and Sahil, everybody celebrate please do clap emojis and party emojis for your friends. Yeah, Ma'am. yes, okay guys, आपके जो बुक में है ये जो 3 टूल्स हैं, प्लाव, होई एंड कल्टीवेटर, इनके पार्ट्स के बारे में बताया कि वो किस किस पार्ट से बना है। इट्स एक्चुअली प्रीटी इजी, सो वी आर गोना वॉच अ वीडियो for seeing what are the different parts. So we are doing 2 topics today. We are doing plowing and tilling, जो soil preparation में आता है। हमने जो parts देखे ना, इसमें जो agriculture practices के parts हैं, उसमें से first 2 parts we are going to do now. ठीक है, in this class. Sowing में भी कुछ tools, 2 tools use होते हैं, और preparation of soil यानी plowing और tilling में 3 tools use होते हैं। फर्स्ट वाले में जो आपको ऑलरेडी पता है कौन से 3 हैं, so sowing ke you don't know, but we are going to watch 2 videos for these 2 parts of agricultural practices. Okay, and I'm going to ask you to write notes also so that we can come back and discuss. Now the only problem is baki ke jo parts hain, you know, after tomorrow we are going to be taking your phones, so we are not really having classes. So I will be sending you the book. You will get some books from the school also. So kindly read a little by yourself. You'll be getting worksheets. थोड़ा थोड़ा अपने आप से books पढ़ के, you have 1 week's time to read this chapter as much as possible by yourself. Because when I start teaching this chapter, within 2 days I will finish all 5 processes. Okay? It will go like super fast. So you have 1 week's time to read by yourself. The first video that we are going to watch, this is what you have to write. So basically you are noting down parts of plow, होई and cultivator. इन तीनों चीजों के क्या क्या parts हैं वो आपको लिखने हैं, ठीक है? तो just write down in your notebook parts of plow, whatever parts they are saying, बस वो कॉमा कॉमा डाल के ये 1 part 2 part ऐसे कॉमा कॉमा डाल के आगे लिखते जाओ बस, ठीक है? Then homework में I'm gonna ask you to do the drawing of these 3. From your book only, I'll send the picture also. Just write nicely colorful drawing बना के you put it in your file. Okay? Soil preparation में तो leveling आता है कि आप ऊपर नीचे जो level होता है उसको एक level में लेकर आते हो, और उसमें plowing आता है जिसमें आप मिट्टी खोद रहे हो, ठीक है? So let's watch this video now. Preparation of soil. Oh wait, it is in super high speed. I keep forgetting to convert it. Okay, now let's watch. The first step of crop cultivation is the preparation. Can you hear it? आवाज आ रही है? Okay, I'm going to start this Ma'am. video from starting. Please be on mute. Preparation of soil. The first step of crop cultivation is the preparation of soil. This step involves turning of soil to loosen it. Turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes in the soil. They further turn and loosen the soil and add humus to it. The humus contains various nutrients which are absorbed by the growing crop. Apart from these, loosening of soil also allows the roots of growing crop to penetrate deep into the soil and helps the plant to breathe easily. Ma'am, your voice is still. Plowing. The process of loosening and turning of the soil is called tilling. So आप लोगों को अगर पूछेंगे क्वेश्चन में what is tilling or plowing, you will write the process of loosening and turning. लूज करना और मिट्टी को नीचे वाला मिट्टी ऊपर लेकर आना, ठीक है? लूज करना and turn करना. Okay, that is what is called plowing. This definition is there in your book. Or plowing.
This is done with the help of different agricultural implements such as plow, hoe, and tractor. We will now see what are these agricultural implements. Plow. Plows are used for प्लीज नाउ आप लोग को नोट डाउन करना है पार्ट्स ऑफ प्लो, हो एंड कल्टीवेटर. सो कीप योर नोटबुक एट हैंड एंड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग. tilling the soil, removing weeds, and scrubbing the soil, etc. Okay, you want me to pause here? Okay, you can write this definition. Okay. Yeah. It is made of wood or iron. It contains a strong triangular iron strip called as plowshare. It is attached to a long log of wood called as plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to a beam. Plow is drawn by a pair of bulls or other animals like horses, camel, etc., where the beam of the plow is placed on the bull's neck. Hoe. A hoe is another agricultural implement used for removing weeds and for Ma'am. loosening the soil. Paused. Let me play this again. I hope you've written the blue box. It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends. Tractors. Nowadays, plowing is done by tractor-driven cultivators. It saves labor and time. This is because a single tractor can plow a large area in a short. Okay, write this down. कल्टीवेटर में आप लिखोगे कि जो ट्रैक्टर या कल्टीवेटर है वो लार्ज एरिया को शॉर्ट टाइम में फ्लो कर सकता है. Let me play again. time. You have learnt that soil is plowed before cultivation. However, plow fields contain big pieces of soil called as crumbs. These crumbs are broken with the help of a plank. Apart from this, plow fields are leveled for sowing. This is done with the help of a leveler. ओके तो मैंने आपको बोला ना प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में दो चीजें आती हैं. एक तो आती है लेवलिंग और एक आती है प्लोइंग. तो लेवलिंग करते हैं लेवलर से और प्लोइंग के लिए तीन चीजें प्लो, होई एंड कल्टीवेटर. ठीक है, होई और हो, एनीथिंग यू कैन कॉल इट. ठीक है, सो थ्री थिंग्स, थ्री टूल्स फॉर प्लोइंग एंड one tool leveler for leveling the field. Okay, so now can we quickly discuss the parts of different tools? तो अगर आपको प्लाव के पार्ट्स बोलेंगे तो ये प्लाव शाफ्ट होता है ऊपर वाला, फिर ये हैंडल होता है, एक प्लाव शेयर होता है और एक और चीज होता है समथिंग कॉल्ड एज द बीम, BEAM, जो कि काऊ के कंधों में ऐसे लगता है. ठीक है, फिर वो उसको पकड़ के ऐसे ड्रैग करते हैं. So guys, can you please draw this as your homework? This is one of your homework. Okay. Okay. Next one is Okay, hoi. Hoi के क्या कौन से parts है? Hoi और ho. What are the parts of Road. ho? Ma'am, I sent you. Ma'am, Some road. of you have already sent it to me. I'm going to read out the answer and I'm going to show you that picture also. This is the ho. Please be on mute, everybody. So amazing. You guys know the parts. Only two parts are there. रॉड है और बेंट प्लेट है. प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. यू हैव टू ड्रॉ दिस. जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा है कैन यू प्लीज सेंड इट टू मी. आई विल सेंड इट टू द ग्रुप. ग्रुप में अभी कोई मत भेजना. ठीक है, सेंड इट टू मी. हैव यू टेकन प्रीवियस वाला स्क्रीनशॉट गाइस? हाँ, ये देखो, ये लाइन में ऐसे ड्रैग करके लेके जा रहा है कल्टीवेटर या ट्रैक्टर. तो इसमें कोई पार्ट्स नहीं है. यू विल जस्ट राइट कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू ट्रैक्टर. ओके, कल्टीवेटर इज अटैच्ड टू ट्रैक्टर, दैट्स ऑल. एंड ये जो आपने क्रम्स देखा वो मिट्टी का बड़ा बड़ा पार्ट्स हैं जिसको
एक प्लैंक लेके, एक जैसे लकड़ी का पीस लेके ऐसे लेवल करते हैं, लेवलर उसको ऐसे मार मार के एक लेवल में पहुंचाते हैं, ठीक है। वो भी ऐसे ट्रैक्टर से लेके जाते हैं ताकि सारी मिट्टी एक ही लेवल पे पहुंच सके। We are going to watch another video guys. It will tell you about sowing of seeds. कि बीज कैसे फार्मर्स फार्म में ग्रो मतलब बोते हैं। हम लोग तो हाथ से लगा देते हैं ना, उनका इतना बड़ा फील्ड। डू यू थिंक दे कैन डू दैट विथ हैंड? No, ma'am. No, ma'am. So how do you think farmers are sowing the seeds? Can you think Machine. about machine? Okay. What? How will that machine work? Do you have any idea? Ma'am, I think they will do with teamwork. Then like cows, two cows they take and Ma'am, Yes. I think they have seeds. No, if their hand they have seeds. No, they can throw. No, ma'am. I saw in that video, put that seeds in doing plowing. No, that time only they put seeds. No. Ah, you guys are super smart. Okay. Umesh said he'll throw the seeds. Okay. Manan said कि जब plowing कर रहे हैं तभी seed लगा रहे हैं. Manan, remember that point. I'm going to show you how they're doing plowing and sowing together. Yes, ma'am. Mehak By said- doing that cow wala picture. Yes, Mehak also said with cows they are doing. When they're taking the cow, that time they're putting seed. Somebody said teamwork के साथ. I only. You only said teamwork के साथ they're doing. Now guys, अभी मेरे को कोई और आंसर करेगा. सिमरन, अल्फिया, हुसैन, शाहिद, साहिल, हुसना, आलिया, हाजिरा, आप में से कोई, आयशा खानम, आप में से कोई, ठीक है, कि अगर हम सीड्स ऐसे ही थ्रो करेंगे, if we just throw the seeds like this, उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? Ma'am, can I tell? ma'am, can you I'm repeat seeing again? raised hands, I'm seeing raised hand. बाकी लोग जिनका नाम मैंने नहीं लिया, वो लोग चैट बॉक्स में प्लीज आंसर लिख लो. Ma'am, Alfia, I you can start. Ma'am, Yes, can start. मैम वैसे ही फेंक डाले तो काम मेरे झाड़ा उग जाते मैम. They do not go straight like that. It won't go straight. Perfect. Any other answer, Aisha? And- Aisha, sorry, I accidentally muted you. Please unmute. and they not get proper that sewing, ma'am. They won't get properly sewed inside. Perfect. Any Yeah. other answer? Sahil. And that they get wasted also. They will be not grow. Wasted, they Yes, won't ma'am. grow. Not Ma'am. straight. Yes, Sahil. Ma'am, if they throw like that, no, that seeds will go another like farmers, and that trees will plant like they become big. No, that Yeah. become teda meda. Teda meda. Amazing. Any different answer, Manan or Shahid? Ma'am, Do you have a and- different Ma'am, answer? I can tell, ma'am. Okay, Manan then Shahid. Yes, Manan. Ma'am, Manan, I can't hear you. Your voice is, I can't hear you at all. Shahid, continue. Ma'am, we can tell. Yeah. Shahid? Ma'am, see that is throw that like no after that happen is grow big. No, that time have it lot of problems, ma'am. There have wires, no there have combus wires. That all is have lot of problem there. Okay, okay, Ma'am, fine. Yes, ma'am. Manan. ma'am, they do when harvesting. No, that time they get lot of problem. While harvesting, they'll have lots of problems. Yes. Any Uh, different answer? Ma'am, I have doubt different. Ma'am, Yes, what Manan. about supply, ma'am? How they will apply water in that big farm? We will learn about that. Very good question. We're going to learn about that. Yes, Aisha and Sahil, any different answer you have? Okay, perfect, guys. I was seeing some answers on the chat box also. Roots nahi properly वो होंगे अगर हम ऐसे ही seeds फेंक देंगे तो. But most farmers do that क्योंकि काफी farmers के पास बड़े बड़े machines नहीं होते हैं. So now what we are going to do, we are going to see how farmers are using tools to do sowing. वो sowing करते कैसे ताकि बीज जो है वो deep अंदर. एक और problem that I can think of is अगर हम बीज ऐसे ऊपर से डालेंगे, think about the birds. What will the birds do? Ma'am, they Ma'am, they will be eating. They will eat it. Like Yes. we but something put no banana like that to them.
Yes. They'll come around and eating one group. Ma'am, Yes. and And that come small that the ploughing boot, no ma'am. yeah. That come small particles, no. The birds and eat that. Yes, the birds will eat all that. Birds will come. That's why they stand at the like no. हाँ, वो scarecrow they put. Yes. Ma'am, Sowing. The most important step in crop. Sorry. Again, my speed. Sorry. I always do this. Yeah. Let me play again. Sowing. The most important step in crop production is sowing. Putting seeds in the soil so that they can grow is called sowing. It is the most important part of crop production. For sowing, farmers select good quality seeds. These are the clean and healthy seeds of good variety. High yielding variety seeds, that is HYV seeds, are the better quality than the normal quality seeds and gives higher yield, higher agricultural produce. How can we select good quality seeds? Let's perform an activity. No, before we perform this activity, raise your hand those who remember this activity. Good seeds को bad seeds से कैसे separate करते हैं? ये आपका question भी था. Who can tell me? Shahid, go ahead. Shahid, then Alfia. Shahid, I'll stop you in between and then I'll ask Alfia. after Umesh. Okay. Shahid, are you gonna answer? No, ma'am, by mistake. Okay. Alfia? मैम वो एक Ma'am, I मशीन रहती also- है मैम पाक और क्लीन करने की मशीन रहती है मैम इन दैट वी डू Clean करने की machine होती है. Okay. Manan? Ma'am, I can tell. Yes. One second, Baba. Manan. I'm sorry, I forgot. Can I ask Umesh because I told him I'll ask him. Half. Okay. Half, okay. Umesh, start off. Ma'am, can I start? Yes. But don't say Ma'am. fully, okay? Manan will say half. Ma'am, I think no. If there is something, ma'am, they will, ma'am, पूरा उन्होंने लेते हैं. लेके बाद, ma'am, if ताजा रहा, so they will pack in good quality. If there is something like one tomato, ma'am, if it damage, if little bit damage, no, they will like normal quality. They will send. Okay, but what was that experiment that I showed you? Ma'am, I There can was- tell. Yes, Manan. Ma'am, I- Continue. Ma'am, they put in land that having no ma'am that seeds and put water which is correct that get attract in the sand which is not good that come up. Okay, Manan ने बोला कि water डालते हैं जो bad है वो ऊपर हो जाते हैं और जो good है वो नीचे आते हैं. But Manan ने बोला water we are putting in sand. Is that correct? Are we putting water in sand? No, not putting water in. Then where are we putting that water and sand and seed? Where are we putting it? In farming land. Okay, Aisha, your hand is raised. Aisha Khanum. Ma'am, if in our class, no, one of students from like village, no, he can explain this very well, ma'am. Yeah, I know, right? मैम आई आल्सो इन विलेज गो आई सी दैट मैम You see, but guys, ये ना good quality seed को ना field में पहले डाल के फिर नहीं select करेंगे कि कौन सा good है कौन सा bad है. ये लोग एक कंटेनर लेंगे, एक पतीला लेंगे, उसमें पानी डालेंगे. Yes, सफिया? मैम वो अच्छा है ना उसे अच्छे से उगाती मैम जो खराब है ना वो कैसा मिले वो डाले झाड़ा उससे वो खराब हो जाता है इसमें Correct. I think if it is damaged, no, or if सड़ गया, ma'am, they can do composting, no. That is Recycle. different. उसके साथ क्या करते हैं वो अलग है, लेकिन सेपरेट कैसे करेंगे? मिक्स होके आएगा ना वो. तो अगर हम एक पतीले में पानी डालेंगे, आप अपने घर में दाल है ना उन सब के साथ ये ट्राई करना. जो अच्छा वाला जो सॉलिड होगा, जो अंदर से खोखला नहीं होगा, वो नीचे आ जाएगा, मतलब वो गुड है. जो अंदर से खोखला होगा, वो लाइट होगा, तो वो पानी में ऊपर फ्लोट करेगा, तो वो बैड सीड्स है. वो बैड सीड्स को बस ऐसे सेपरेट करना है और जो पानी के नीचे सीड्स है उसको बो देंगे. सिंपल.
ओके, दैट इज द एक्सपेरिमेंट जो ये अभी यहाँ पर भी बताएंगे, ठीक है। बट वेरी गुड गाइज, आप लोग को एटलीस्ट हाफ एक्सपेरिमेंट पता था। वेरी नाइस, वेरी हैप्पी टू सी दैट। Selection of good seeds. So, we learned that the seeds which sink in water are of good quality and those which float are of bad quality. ठीक है, this is what happens. Now, let me introduce some tools which are used for sowing. Count the Traditional tools. It is a funnel-shaped tool provided with 2 or 3 pipes. The pipes have sharp ends. These ends go into the soil. Seeds fill into the funnel, passes through the pipes and go deep into the soil. Please take a screenshot of this. I'm gonna ask you to draw this and put it in your file. Ma'am, I'm writing also. Okay, Okay, ma'am. 5 seconds. Done, ma'am. 3, 2, 1. Nowadays, we use more improved tool, that is seed drill, which is used for sowing with the help of tractor. With this tool, it is possible to sow seeds uniformly at proper distance and depths. This tool also helps to place the soil on the seeds so that bird could not eat them. Because of machines used for sowing, lot of time and labor can be saved. Keeping distance between seeds help to avoid overcrowding of plants, which in turn allows plants to get sufficient sunlight, nutrients, and water from soil. I hope you understood the step of crop production very well. Thanks for watching this video. Okay. You're most Guys, now I'm gonna quickly tell you, आपके बुक में से हमने ये सारा लास्ट टाइम पढ़ा था, क्रॉप एंड ऑल दैट, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तक, ठीक है। टुडे वी डिड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यहाँ पे जितना भी लूजनिंग ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल ऊपर आ जाता है। ये पैराग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बताएगा कि आपका सॉइल लूजन करने का इंपॉर्टेंस क्या है। दैट आंसर, व्हाई इज लूजनिंग एंड टिलिंग, what all of that, why is it important, that answer you will get from here, page number 2 में, ठीक है। I send you pictures, don't worry. Agricultural implements, same चीज यहाँ पर आपको दी है, प्लो, कोई और यहाँ पे कल्टीवेटर। यहाँ पे आपको ये जो पिक्चर दिया है ना, इट्स अ लिटिल डिफरेंट, ओके, बट डोंट वरी। यहाँ पे आपको ये रॉड, ये ग्रिप हैंडल, ये सब जो दिया है, डोंट वरी, डोंट लुक एट दिस कॉम्प्लिकेटेड ड्रॉइंग, इट्स द सेम। यहाँ पे वो बेंट प्लेट है और वो वुड वाला रॉड इन्होंने अलग से बनाया। यू ड्रॉ द सिंपल वन, यू डू द सिंपल वन, ओके। देन वी हैव सोइंग। सोइंग में 2 टूल्स वी सॉ, ट्रेडिशनल टूल्स, जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इफ यू कैन जूम इन एंड सी, यहाँ पे प्लविंग भी चल रही है और सोइंग भी चल रही है, लाइक मनन सेड। यस, नाउ आई वांट यू टू टेल मी समथिंग इन दिस in this picture. There is something wrong with this field. What is that? Can somebody identify? Ma'am, that is Can I tell me? Teda. It is teda. Yes. Arfad, what should we do to solve this problem? We should put water on it and make it tight, ma'am. Make it tight. We use leveler. We will level it. यहाँ पे कहीं पे आपको leveler की बात भी कर रहे हैं। Ploughing or tilling we want to do first. Yes, and then leveling also. Ploughing and tilling and leveling. Just take a look at this also. Leveling the field. ठीक है? Leveling is done with the help of a leveler. So soil preparation में 2 things, ploughing and leveling will be there. And that is, see now this is in a level. And this is plough का drawing. Okay? Then आपने पूछा था ना इरिगेशन के बारे में। देखो यहाँ पे इसके बाद ना गाइस, सीड ड्रिल के बारे में बताया है और ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में बताया है, which we have already seen in the video. आगे मैन्योर और फर्टिलाइजर बताएंगे आपको कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर क्या है, 2 अलग चीजें हैं। गो थ्रू इट, ओके, प्लीज गो थ्रू इट। आई सेंड यू द टेक्स्ट बुक लिंक, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट yesterday also. Please go through it. Now Umesh का question about irrigation. There are different sources of irrigations like wells, ponds, all these things. Poor people usually use this. ठीक है, ऐसे करके they do. There are different things like moat,
पानी लेके ऐसे डाल देते हैं. देयर इज डेकली, देयर इज चेन पंप, देयर इज राहत. ये है ट्रेडिशनल टूल्स like Umesh asked, no, that's why I'm showing now. Ma'am. That if you have doubts, I'm going to take that. There are two main system, sprinkler and drip system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. इसको रीड कर देना. स्प्रिंकलर जो पार्क में स्प्रिंकलर करते हैं, तो अलग अलग प्लांट टाइप की वजह से अलग अलग जगह में, जैसे राजस्थान में ज्यादा पानी नहीं होता है, तो हम स्प्रिंकलर करके इतना आयाशी में हम प्लांट्स को पानी दे नहीं सकते हैं, तो हम उनको बूंद बूंद करके ड्रिप सिस्टम में पानी देते हैं. ठीक है, तो यू जस्ट रीड थ्रू दिस. प्रोटेक्शन ऑफ वीड एंड ऑल विल डू नेक्स्ट टाइम. ये हार्वेस्टिंग सिकल जो साहिल ने बोला था, कुर्फी. ठीक है, एंड देन वी हैव स्टोरेज. स्टोरेज करते हैं हम बड़े बड़े ग्रेनरीज में, इतने सारे स्टैक करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं सिलोज या ग्रेनरीज, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो दैट्स ऑल. Now I'm going to take your doubts, but while I'm taking your doubts, I have a form right here. I'm going to send the link of this form to you guys on the chat box. Okay, you guys are going to click on this link. There are 5 questions and I can see कौन answer करके जाएगा. So you all have to answer before you leave. Okay, only 5 questions. Choose the correct answer in the form and then you guys can leave.